वेलकम टू निकिता के न्यूज चैनल। अभी तक हमने देखा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, वो कैसे ओरिजिनेट होता है, उसका नेचर कैसे होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि उसकी टाइप्स क्या होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। सो फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके नेम से ही पता चल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो रेस्ट में है। इन फिगर गिवन, when applying some force to the block, it will not move. It is rest. It is at rest. So static friction, friction between two bodies in contact when one body just move or just tends to move over the other. मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब एक फोर्स है that keeps an object at rest. Static friction is the maximum value of the frictional force between two surfaces which can prevent one surface from sliding over the other. It keeps the object stationary when it placed on a surface. Obviously, ये maximum value of force है. Frictional force की value maximum होती है in static friction. हमने फ्रिक्शन के फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, एक अपोजिट फोर्स है टू द मोशन. सो इन स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन तो हो ही नहीं रहा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है. सो ऑफकोर्स इन स्टैटिक फ्रिक्शन देर इज अ मोर वैल्यू ऑफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जर्व. टू ओवरकम हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स we need to apply high force. When the applied force overcomes static friction, the object starts moving, and static friction at this point, static friction ceases, and the kinetic friction takes over. So next type of the friction is kinetic friction or sliding friction. In kinetic friction, block just start to sliding continuously. So kinetic friction, friction between two bodies in contact when one body is sliding over the other. It means we can say that here फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा कंपैरिजन टू द स्टैटिक फ्रिक्शन. इन जनरल वी कैन से दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू मूविंग surfaces. थर्ड टाइप इज रोलिंग फ्रिक्शन. When object is rolled on a surface, it produces rolling friction. So by applying force to the object, it starts to roll on a surface. So rolling friction is friction between two bodies in contact when one body is rolling over the other. As we see, static friction has maximum value of the frictional force. Then kinetic friction has some less value than static friction. And last, rolling friction has very less value of the frictional force. So according to that, the force of static friction is greater than force of kinetic friction, and force of kinetic friction is greater than force of rolling friction. So sequence is given. Static friction में ब्लॉक और एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में रहता है, kinetic फ्रिक्शन में जस्ट मूव होना स्टार्ट करता है, एंड रोलिंग मोशन में वो पूरा मोशन में आ जाता है. अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे हर एक फ्रिक्शन के. सो इन स्टैटिक फ्रिक्शन सिंपल एग्जाम्पल्स आर पेंसिल ऑन अ टेबल और बुक मार्क इन अ बुक. ओके. काइनेटिक फ्रिक्शन का सिंपल एग्जाम्पल, हम अपने हैंड्स रब करते हैं. सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब अगेंस्ट ईच अदर, फ्रिक्शनल फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. ओके. दूसरा एग्जाम्पल ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर wear and tear of machine parts. Examples for rolling friction is rolling of truck tires, bike wheels, car tires, basketball, etc. तो ये सब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, उसमें ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है. सो
हम अभी हम उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे. Rolling friction takes place when object rolls on a surface, or sliding friction takes place when two surfaces are rubbed against each other. Simple difference between them. जब कोई ऑब्जेक्ट रोल्स होता है ऑन सरफेस, विच इज रोलिंग फ्रिक्शन, और जब कोई दो सरफेसेस रब होते हैं अगेंस्ट ईच अदर, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन कैसे होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेसेस, but sliding friction takes place due to interlocking between microscopic surfaces. So these are the two main differences between rolling friction and sliding friction. So these are the three important types of the friction which are responsible to move any object. Hope you understand this all. Thanks for watching my video.